In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है, यानी फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। आइए हम सबसे पहले इसके उर्दू फ़िक्रों की निशानी देखते हैं। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है। अच्छा, इन जुमलों में वक्त का जिक्र लाजमी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रहा होगा, रहे होंगे आएगा, बल्कि ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, यानी जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये काम सिर्फ कुछ देर तक जारी रहा है, यानी सिर्फ बात करते वक्त जारी नहीं होगा, बल्कि इसमें वक्त का ज़रूर जिक्र होता है। तो ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम वक्त का जिक्र लाजमी करते हैं। इस टेंस के जुमले बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने शैल हैव बिन या विल हैव बिन के बाद इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, और फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हमने शैल या विल का ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। लेकिन चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और विल के बाद हमेशा हैव आता है। चूँकि हैव की डिमांड थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हमने बिन का लफ्ज़ लगाकर इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, और विल हैव बिन के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी उसको हम इंग फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने टाइम का जिक्र करना है। चूँकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये सिंस और फार का इस्तेमाल तफसील से बयान कर दिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आप उसकी दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़िक्रे में दिए हुए शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें तो फ़िक्रा मनफी बन जाता है। याद रखें, नॉट हमेशा शैल हैव या विल हैव के दरमियान लगाया जाता है, यानी शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। इसी तरह अगर हम शैल या विल को फ़िक्रे के शुरू में लगा दें तो फ़िक्रा सवालिया बन जाता है, यानी सिर्फ हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ शैल या विल को जो है ना वो छेड़ना होता है, बाकी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। इसी तरह मनफी सवालिया फ़िक्रे के लिए शैल या विल को फ़िक्रे के शुरू में, फिर फाइल, फिर नॉट और फिर हैव बिन, और हैव बिन के बाद हमेशा इंग फॉर्म आती है, और टाइम के लिए हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी हम दोबारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद विल या शैल हैव बिन, उसके बाद इंग फॉर्म, और टाइम के लिए सिंस या फार, यानी सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि फार जो है हम पीरियड ऑफ टाइम यानी क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, लेकिन सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे लाइक ये यूज़ करते हैं। नेगेटिव के लिए हमने शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, जबकि सवालिया के लिए हमने शैल या विल को फ़िक्र के स्टार्ट में लगाना है, और नेगेटिव क्वेश्चन में हमने शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद हैव बिन आएगा। एक सब्जेक्ट को हम सिर्फ चेंज करके जुमले की प्रैक्टिस करेंगे, यानी वन सेंटेंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मसलन, मैं 10 दिन से मार्केट जा रहा हूँ, आई विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। हम 10 दिन से मार्केट जा रहे होंगे, वी विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। तुम 10 दिन से मार्केट जा रहे होगे, यू विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। वो 10 दिन से मार्केट जा रहा होगा, ही विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। वो 10 दिन से मार्केट जा रही होगी, शी विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। वो 10 दिन से मार्केट जा रहे होंगे, दे विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। अबू 10 दिन से मार्केट जा रहे होंगे, पापा विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। अम्मी 10 दिन से मार्केट जा रही होंगी, मामा विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। अली 10 दिन से मार्केट जा रहा होगा, अली विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। लोग 10 दिन से मार्केट जा रहे होंगे, पीपल विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 डेज। तो सो यू मस्ट हैव नोटेड, हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है, आगे सारा जुमला वही का वही रहता है। चूँकि 10 डेज एक क्वांटिटी ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हमने फार यूज़ किया हुआ है। अगर कोई इसके साथ स्पेसिफिक टाइम होता तो हम सिंस लगा लेते, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने विल हैव बिन का बाद इंग फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए सिंस या फार का यूजेज करना है। अच्छा, इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो यही है कि डिस्क्राइबिंग एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त तक जो काम जारी रहते हैं, उनके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। मसलन, मैं 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँगा, ये देखें कर रहा हूँगा, अभी फ्यूचर की बात हो रही है, और साथ हमने
پیریڈ آف ٹائم دے دیا, یعنی کوانٹٹی دی کتنے منٹ, 10 منٹ, اس لیے اس کی انگلش ہوگی I'll have been waiting for 10 minutes. وہ 5 سال سے انگریزی پڑھ رہی ہوگی, she'll have been studying English for 5 years, یعنی she will have been studying English for 5 years. اگلے سال تک مجھے یہاں کام کرتے 10 سال ہو جائیں گے. By next year I'll have been working at this place for 10 years. By next year I'll have been working at this place for 10 years. اب چونکہ یہ جو ٹینس ہے اس کا بڑا لمیٹڈ سا یوزیج ہوتا ہے, بٹ اگین اٹ از امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے کبھی ہمیں بات کرنی پڑ جاتی ہے, جیسے میں ابھی ایگزامپل دی ہے, وہ 2 سال سے وہاں کام کر رہا ہوگا یا ہم 5 سال سے وہاں رہ رہے ہوں گے, تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم یہ ٹینس یوز کرتے ہیں. آئیے اب ہم اس کی سینٹنسز کے مزید پریکٹس کرتے ہیں, اور اب ہم ہر سینٹنس کو ایک دفعہ نیگیٹو بھی بولیں گے, پھر انٹیروگیٹو بھی, اور پھر نیگیٹو انٹیروگیٹو بھی بنائیں گے, یعنی ایز یوزول ہر سینٹنس کو ہم مزید 3 ٹائمز جو ہے وہ چینج کریں گے. مثلا میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں گا, I'll have been waiting for an hour. I'll have been waiting for an hour. میں 1 گھنٹے سے انتظار نہیں کر رہا ہوں گا, I'll not have been waiting for an hour, یا I won't have been waiting for an hour. کیا میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں گا, will I have been waiting for an hour. Will I have been waiting for an hour. کیا میں 1 گھنٹے سے انتظار نہیں کر رہا ہوں گا, will I not have been waiting for an hour, یا won't I have been waiting for an hour. ہم صبح سے اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے, we'll have been learning our lesson since morning. We'll have been learning our lesson since morning. ہم صبح سے اپنا سبق یاد نہیں کر رہے گے, we'll not have been learning our lesson since morning, یا we won't have been learning our lesson since morning. کیا ہم صبح سے اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے, will we have been learning our lesson since morning. Will we have been learning our lesson since morning. کیا ہم صبح سے اپنا سبق یاد نہیں کر رہے ہوں گے, will we not have been learning our lesson since morning, یا won't we have been learning our lesson since morning. تم 1 گھنٹے سے گپ شپ لگا رہے ہوگے, you'll have been chatting for an hour. You'll have been chatting for an hour. تم 1 گھنٹے سے گپ شپ نہیں لگا رہے ہوگے, you will not have been chatting for an hour, یا you won't have been chatting for an hour. کیا تم 1 گھنٹے سے گپ شپ لگا رہے ہوگے, will you have been chatting for an hour. Will you have been chatting for an hour. کیا تم 1 گھنٹے سے گپ شپ نہیں لگا رہے ہوگے, will you not have been chatting for an hour, یا won't you have been chatting for an hour. شام سے بوندا باندی ہو رہی ہوگی. اب چونکہ یہاں دیکھیں پوائنٹ آف ٹائم ہو گیا ہے, اس لیے ہم نے since یوز کیا ہوا ہے. It will have been drizzling since evening. It will have been drizzling since evening. شام سے بوندا باندی نہیں ہو رہی ہوگی, it will not have been drizzling since evening, یا it won't have been drizzling since evening. کیا شام سے بوندا باندی ہو رہی ہوگی, will it have been drizzling since evening. Will it have been drizzling since evening. کیا شام سے بوندا باندی نہیں ہو رہی ہوگی, will it not have been drizzling since evening, یا won't it have been drizzling since evening. وہ کافی عرصے سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوگا, he'll have been saving up for ages. He'll have been saving up for ages. وہ کافی عرصے سے پیسے اکٹھے نہیں کر رہا ہوگا, he'll not have been saving up for ages, یا he won't have been saving up for ages. کیا وہ کافی عرصے سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوگا, will he have been saving up for ages. Will he have been saving up for ages. کیا وہ کافی عرصے سے پیسے اکٹھے نہیں کر رہا ہوگا, will he not have been saving up for ages, یا won't he have been saving up for ages. وہ یہاں 2 ماہ سے رہ رہے ہوں گے, they'll have been living here for 2 months. تو دیکھیں یہاں ہم نے چونکہ پوائنٹ آف ٹائم نہیں دیا بلکہ پیریڈ آف ٹائم دیا ہوا ہے, 2 ماہ کی بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم نے فار یوز کیا ہوا ہے. they'll have been living here for 2 months. وہ یہاں 2 ماہ سے نہیں رہ رہے ہوں گے, they'll not have been living here for 2 months, یا they won't have been living here for 2 months. کیا وہ یہاں 2 ماہ سے رہ رہے ہوں گے, will they have been living here for 2 months. Will they have been living here for 2 months. کیا وہ یہاں 2 ماہ سے نہیں رہ رہے ہوں گے, will they not have been living here for 2 months, یا won't they have been living here for 2 months. احمد 10 سال سے کام کر رہا ہوگا. احمد will have been working for a decade. ڈیکیڈ کا مطلب ہوتا ہے 10 years. 10 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیکیڈ بولتے ہیں. احمد 10 سال سے کام کر رہا ہوگا. احمد will have been working for
a decade. احمد 10 سال سے کام نہیں کر رہا ہوگا. احمد will not have been working for a decade. یا احمد won't have been working for a decade. کیا احمد 10 سال سے کام کر رہا ہوگا؟ Will Ahmed have been working for a decade? Will Ahmed have been working for a decade? کیا احمد 10 سال سے کام نہیں کر رہا ہوگا؟ Will Ahmed not have been working for a decade? یا won't Ahmed have been working for a decade? وہ سالوں سے سبزیاں اگا رہے ہوں گے. They'll have been growing vegetables for years. They'll have been growing vegetables for years. وہ سالوں سے سبزیاں نہیں اگا رہے ہوں گے. They will not have been growing vegetables for years. یا they won't have been growing vegetables for years. کیا وہ سالوں سے سبزیاں اگا رہے ہوں گے؟ Will they have been growing vegetables for years? Will they have been growing vegetables for years? کیا وہ سالوں سے سبزیاں نہیں اگا رہے ہوں گے؟ Will they not have been growing vegetables for years? Will they not have been growing vegetables for years? So I think you must have noted کہ ہم نے جتنے بھی سبجیکٹ یوز کیے ہیں ان میں ہم نے چاہے وہ سنگولر تھا، پلورل ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، ہم نے سب کے ساتھ ول ہیو بین کے استعمال کیا ہے اور ول ہیو بین کے بعد انگ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ. اسی طرح ٹائم آف پیریڈ یعنی جو کوانٹٹی آف پیریڈ ہے اس کے لیے ہم نے فار یوز کیا، اور پوائنٹ آف ٹائم کے لیے یعنی اگر مقرر مدت ہے تو پھر آپ فار لگائیں گے. اگر صرف خاص وقت دیا گیا ہوا ہے، صرف اس کا نام دیا گیا اور ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے وقت کے پاس، اگر ہمیں ایگزیکٹ وقت اب معلوم نہیں ہے تو پھر ہم سنس لگائیں گے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. آئی ہوپ یو ول ہیو انجوائڈ دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.